Hello everyone. I hope all of you are fine and staying well. So today I am going to start with you a chapter that is better known as glycolysis. This is a chapter that is there in semester 4 CC10. Glycolysis basically is part of your biochemistry and it comes under the unit carbohydrate metabolism. So all of you are well aware that glycolysis is a metabolism of a carbohydrate molecule. Now, what is a carbohydrate molecule? A carbohydrate molecule is something that contains CHO as its major backbone and has an aldehyde or a what you call acetone as its functional group. Now, this figure shows you the three important biomolecules in your body: the proteins, the fats, the carbohydrates. The protein gets converted into amino acids, fats get converted into fatty acids, and carbohydrates get converted into glucose. Now, when I say converted, it means they are broken down into their simpler forms in these very small sized molecules. Now, protein gets broken down into amino acids, and further, with the help of protein catabolism, it forms acetyl coenzyme A. Similarly, the fats, after getting broken down into fatty acids, through fatty acid oxidation, they will come to the acetyl coenzyme A. And what we are discussing here, the carbohydrates, that is the glucose, by the process of glycolysis, will form this acetyl coenzyme A, or meet the acetyl coenzyme A, we should say. Now, acetyl coenzyme A has two fates. It will enter the citric acid cycle and oxidative phosphorylation in one, and in other it will help in the fatty acid synthesis. So you have to remember acetyl coenzyme A is responsible for both these things. And finally, the energy or the ATP that is released from your body is through the citric acid cycle, or whatever you say, the PPP. So moving ahead, this is the glucose. The diagram has been taken from Lehlinger Principles of Biochemistry. So I have referred the diagram from there, and this diagram is taken from that particular book, 2008 publication. So you can, as you can see, glucose, how it is helpful in our body. There are few things that will tell you how glucose is a very important molecule in our body that undergoes catabolism or anabolism. So glucose is helpful in the synthesis of structural polymers. For example, the extracellular matrix and cell wall polysaccharides, like you all remember that in bacteria, the cell wall is made up of this particular carbohydrate. Secondly, glucose can be stored in our body, and it gives you energy when you are starving and when you're not taking instant glucose. Like for example, these storage glucose are termed as glycogen, starch, sucrose. Next, now glucose, once it is oxidized through the pentose phosphate pathway, it will give ribose 5-phosphate, which is a very important intermediate compound in your metabolic process. And glucose also forms pyruvate or gives pyruvate through the process of glycolysis. So today we are going to consider the formation of pyruvate by glucose. So if you know, glucose occurs in the cytoplasm. So glucose, you can see the molecular formula of glucose, and this glucose will be forming pyruvate at the end in glycolysis. Now, glycolysis can be divided into two phases. Glycolysis is a 10-step reaction. Glycolysis has a 10-step reaction. So the first 5 reaction of the glycolysis is known as preparatory phase, and the other 5 reactions are known as the payoff phase. So preparatory and the payoff phase. So if I want to say what is glycolysis, so glycolysis is a process which needs enzyme for the breakdown of what kind of molecule? Glucose molecule. This glucose molecule, once it is broken down, it is forming 2 molecules of phosphate. I'm sorry, not 2 molecules, 2 pyruvate molecules I should say. Now, glucose is a 6 carbon compound. ये 6 कार्बन का कंपाउंड है.
जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनाता है ना। आप लोग सबको पता है कि एक कोई किसी इक्वेशन को जो आप लिखते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन का, वो बैलेंस होना चाहिए ना। जो अगर ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो सब कुछ रिएक्शन ख़त्म होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बने उसमें 6 कार्बन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि पायरुवेट में 3 कार्बन होता है। क्योंकि 3 कार्बन होता है पायरुवेट में, तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है, तो टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 6। तो अगर ग्लूकोज इन द बिगनिंग इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, सो एट द एंड इवन इफ यू आर गेटिंग पायरुवेट, इट विल नॉट बी 1 मॉलिक्यूल, इट विल बी अ 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड, सॉरी अ 3 कार्बन कंपाउंड. Now during glycolysis, free energy is released. Remember, free energy is released and conserved in the form of ATP and NADH. When glycolysis happens, ATP and NADH are formed and conserved. Glycolysis is an almost universal central pathway of glucose catabolism. This is very important to remember. It's a universal central pathway of glucose catabolism. Now let us, I hope you have understanding. Now glycolysis occurs in 10 steps, I told you. The first 5 steps where glucose gets converted into glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-phosphate, then glyceraldehyde 3-phosphate plus dihydroxyacetone phosphate. ये जो 5 रिएक्शंस हैं, इनको आप प्रिपरेटरी फेज कहते हैं. क्यों प्रिपरेटरी फेज कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज का मतलब प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर. So what is happening here? The glucose molecule becomes ready for breakdown. ये 5 steps में ग्लूकोज अपने आप को तैयार करता है ब्रेक करने के लिए, to break. Until unless glucose breaks, it will not form the pyruvate molecule at the end. So in these 5 reactions, the glucose makes itself ready for breakdown, and for the breakdown of glucose, energy has to be invested. You need ATP for the reactions. Okay. एंड थर्डली, प्रिपरेटरी फेज जो भी होगा उसमें ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है. फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, तो क्या हो गया प्रिपरेटरी फेज में? ग्लूकोज बिकम्स रेडी टू अंडरगो ब्रेक डाउन. इट नीड्स एनर्जी, सो एनर्जी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस. एंड थर्डली, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. तो ये जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. सो एज यू कैन सी, the first reaction where glucose is forming glucose 6-phosphate. So glucose 6-phosphate, what does this mean? It, as you can see, at the 6th carbon of glucose there is an OH in glucose. Now when it is changing to glucose 6-phosphate, this 6th carbon loses a hydrogen and it gains a phosphate group, P. ये P कहाँ से आता है? Now ATP अपना एक फॉस्फेट जो है वो देता है, and ATP gets converted into ADP. So you can say that glucose is phosphorylated at OH group of the C6 carbon, in which 1 molecule of ATP is consumed. So if 1 molecule of ATP is consumed, you will be getting 2 molecules. So adenosine diphosphate. The reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase. The enzymes are very, very important. You need to remember every enzyme in every step of a biochemical reaction. And this hexokinase works only under the presence of magnesium. Now come to second step, where glucose 6-phosphate gets converted into fructose 6-phosphate. So here what happens? Now here the enzyme that works is phosphohexose isomerase. Here only you can see that there's a isomeric change. Now this was a hexose sugar. This hexose sugar is getting converted into a pentose sugar, and in the beginning there was phosphate only at the 6th position. So now here what will happen? Here also the phosphate is only at the 6th position only, but because this hexose ring has converted itself into a fructose molecule, so now the molecule will be called fructose 6-phosphate. So fructose is an isomerase of isomer of glucose, not isomerase. Isomerase is an enzyme. So fructose is an isomer of glucose. Then you can see
In the third reaction, this fructose 6-phosphate gets converted into fructose 1,6-bisphosphate by the help of the enzyme phosphofructokinase. Now this reaction is catalyzed by this enzyme that is known as phosphofructokinase in the presence of magnesium ion. What happens here? Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate and one molecule of ATP again is consumed here. So you can see again phosphorylation is happening. पहले सिर्फ 6 कार्बन पे था, अब पहले कार्बन पे भी आपका phosphorylation हो जाएगा. Enzyme needed is phosphofructokinase and again क्योंकि phosphorylation हो रहा है, energy in getting invested, so ATP will एक ATP का phosphate चला जाएगा तो ATP will become ADP. So you can see in the reaction ATP gets converted into ADP. Now fructose 1,6-bisphosphate will convert itself into glyceraldehyde 3-phosphate. Right? Glyceraldehyde 3-phosphate का क्या है functional group? इसका functional group है आपका what do you say? Aldehyde. और आप देख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के साथ साथ वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना रहा है. नाउ दिस इज ये दो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है. So what it is doing, dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate both are isomers. So both of them, you can see both of them are forming. Now this reaction is catalyzed by the enzyme triose phosphate isomerase. So as you can see, आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में इनके फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है. अदरवाइज क्या है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, बट द ओनली थिंग इज दैट they are isomers of each other and they have different what you call functional groups, right? Now glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxy acetone phosphate, both of them are not going to proceed in the reaction. फिफ्थ रिएक्शन के बाद जब सिक्स्थ रिएक्शन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ता है. अब देखिए कौन सा आगे बढ़ेगा. जो इम्पॉर्टेंट बढ़ेगा, जो इम्पॉर्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. नाउ ये एक सेल मेटाबॉलिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके, जहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आगे बढ़ता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं बढ़ता. Now what is happening that when these products are formed, then dihydroxyacetone is found in a little more amount as compared to glyceraldehyde 3-phosphate. Now dihydroxyacetone or what you call DHEP is a precursor to triglycerides, मतलब कि वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि जो G3P है यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ये इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का और ये ATP प्रोड्यूस करने का प्रोसेस में हेल्प करता है. नाउ व्हाट हैज़ टू बी डन, DHEP का कन्वर्शन पूरा ग्लिसरल्डिहाइड में हो जाना चाहिए. बोथ आर रिवर्सिबल, ओके, सो बोथ ऑफ देम आर इंटरकन्वर्टिबल. सो दोनों में से कोई एक ही आगे जाएगा तो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन ज़्यादा है और ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो कम है. नाउ ली-शैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपका DHAP ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या करना, वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate को के पास इक्विलिब्रियम बराबर करने के लिए डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन से स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate so that an equilibrium is maintained, right? Now if there is lot of ATP around the cell, there is no need for the process of glycolysis to occur. मान लो अगर सेल के पास बहुत ATP है तो ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है ना सेल को, क्यों करेगा सेल ग्लाइकोलिसिस. तो क्या होगा, दस द इक्विलिब्रियम जो होगा वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ज़्यादा नहीं बनेगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की तरफ मूव करेगा तो ज़्यादा वो बने ताकि बॉडी का नीड फुलफिल करे. लेकिन यहाँ क्या है, हमारा बॉडी को ATP चाहिए. अब DHAP ATP नहीं बनाएगा, DHAP ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस में हेल्प करेगा. सो ये जो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड मोर इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate सो दैट ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate रहे और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो है वो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाए और रिएक्शन को कंप्लीट करे, ठीक है. सो G3P और DHAP में कोई एक ही आगे बढ़ता है. नाउ यू कैन सी these are the 5 steps, these are called the preparatory phase. Why preparatory phase? because आपने देखा कि दो जगहों पर फॉस्फोरस का इनपुट होता है. किन दो जगहों पर, पहला तो
फर्स्ट रिएक्शन पे और तीसरा थर्ड रिएक्शन पे, यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट में आपका ATP का इन्वेस्टमेंट होता है. नाउ इन 5 रिएक्शंस को आप एक सिंपल तरीके से देखें कि देखिए कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कैसे 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है. देन सेकेंडली देयर इज अ सिंपल आइसोमराइजेशन चेंज where hexose sugar converts into a ribose sugar. Then fructose phosphate under the influence of phosphofructokinase 1 gets converted into fructose 1,6 bisphosphate, यानी पहला कार्बन पे तो 6 कार्बन पे तो सॉरी था ही फॉस्फेट ग्रुप, और पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आ जाएगा. और उसके बाद देखिए फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज के प्रेजेंट में दो चीज़ें बना सकता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल. और इनके इंटरकन्वर्टिबिलिटी की वजह से क्या हो सकता है, कौन बनेगा ज़्यादा वो जो होता है वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है. ना मैंने जैसा कहा DHAP ट्राइग्लिसराइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और G3P ATP का सिंथेसिस के लिए. अब ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है, मेनली ATP बनने के लिए. अब ATP बनाना है तो रिएक्शन किस तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो जो भी DHAP है दैट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट यू कॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ओके, so these are the 5 phases which are known as preparatory phase. So please go through this properly, and in the next video I shall be discussing with you what you call as the other 6 things of the glycolysis cycle. Okay, and so girls, understand and study properly, and then we'll